कॉर्पोरेट इंडिया के चमकते सितारों में एक नाम जो काफ़ी चमक रहा है वो है अनीश शाह का। डॉक्टर अनीश शाह, जी हाँ, एमएनएम के सीईओ एंड एमडी एमएनएम ग्रुप के। और इन्होंने एमएनएम ग्रुप को ज्वाइन किया था 2014 में। उसके बाद 2019 में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसके बाद पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली 2020 से। इनकी लीडरशिप में एमएनएम निफ्टी का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, और कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो इनकी लीडरशिप में कंपनी ने अचीव किए। यही नहीं, डॉक्टर शाह, इससे पहले आपको बताने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि जीई के साथ एसोसिएटेड रहे 14 साल, जहाँ पे इन्होंने 33 अलग अलग कंट्रीज़ में जीई के लिए काम किया। इनकी पीएचडी ने सिर्फ 2 साल और 9 मंथ लगाए, जो उस समय का एक रिकॉर्ड था। और खुद आईएम एल्यूमिनस हैं और इनके पेरेंट्स भी आईएम एल्यूमिनस हैं। तो एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व से मैं आज बात करने वाला हूँ। डॉक्टर शाह, थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और हमसे बात की। आपकी लीडरशिप में एमएनएम ने काफ़ी प्रोग्रेस की है। इसका श्रेय आप किसको देंगे अपार्ट फ्रॉम योर ओन लीडरशिप, और आगे के लिए आपका विजन क्या है? सो थैंक यू अनुज, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर विथ यू। जो हमारी तरक्की है उसका श्रेय जाता है हमारे एसोसिएट्स को। दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, एंड मोर देन दैट इट्स आल्सो द कल्चर वी हैव हैड। तो इफ यू लुक बैक इन हिस्ट्री, M&M was the best performing stock from 2002 onwards, and even today as you look at the Nifty, M&M will be ideally number one or maybe second or third over that time period. And our leaders have always had that vision and the execution. So for us, the first thing was to go back to the capital allocation discipline we had in the past. We brought that back. The second was to be bold in terms of how we were thinking. And our mantra is do less, but whatever we do it very well. And that's something you can see across everything we're doing. The cars that we deliver today, the quality is outstanding. It is not just for the segment it is in. Even if you were to look at cars that were 2 or 3 times more expensive, it will still stand up very well in comparison with them. The tractors that we have are world-class tractors. We are winning across the global space in that. And across our businesses, we really had all our businesses doing well. So our associates are the ones who've really driven this performance, and all the credit goes to them. कैपिटल एलोकेशन की आपने बात की। महिंद्रा ग्रुप की एक री रेटिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो इतने बड़े ग्रुप के को आप ओवरसी करते हैं, कितना टफ रहता है कैपिटल एलोकेशन का डिसीजन लेना, और क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप उसमें? The main thing is to ensure consistency. So capital goes to businesses that perform, and therefore execution is as important as a decision to allocate capital. So for us, ensuring that we have a right to win, which is a very good competitive sustainable advantage. Second, making sure that we can execute well, we have the right people in place. And third is that we are agile, because it's very easy for a large company to fall into the trap of bureaucracies. So that's the one thing that we're very conscious of, is be lean, be agile, and win in the marketplace. बिल्कुल। तो इस समय आपका फोकस एरिया, क्योंकि आप पूरे ग्रुप को संभाल रहे हैं, इस समय आपका फोकस एरिया, सबसे नंबर 1 फोकस एरिया अगर कहा जाए तो किस पर होगा? Number 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि we have lots of businesses that are all doing very well. So auto is clearly a big focus area. The farm business, Mahindra Finance has seen a very good turnaround and is on a very good track right now. So I've spent a fair amount of time with Mahindra Finance. Tech Mahindra, we have a new leader and a plan to really get Tech Mahindra to do extremely well over the next few years. Beyond that, we have a solar business, holidays, life spaces, real logistics, and a few other businesses as well. So all of them require some level of focus. But the primary thing that's consistent across that is making sure that there's a discipline of execution. It's not just capital allocation, it's making sure the businesses execute well. Okay. तो क्योंकि आपके सब बिजनेसेस अलग अलग सेगमेंट में हैं, टेक में ऑब्वियसली एक इस समय एक थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है। जो ग्रोथ हम 10 साल पहले देख रहे थे उसके मुकाबले काफ़ी कम है। ऑटोज़ दूसरी तरफ बूम कर रहा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। महिंद्रा फाइनेंस अब तक एक अंडर परफॉर्मिंग कंपनी रही थी, लेकिन अब शायद उसमें भी थोड़ा सा टर्न अराउंड आ रहा है। तो ये जो 3-4 बड़े बिजनेसेस हैं, इसमें आपके टारगेट्स क्या हैं आगे जाते हुए? Auto continue to stay number 1 in SUVs. Beyond India, go global. Be a leader in electric vehicles. In 3-wheelers, we already have 65-70% market share. In 4-wheelers, we're coming up with 5 born electric SUVs.
and more beyond that as well. So we're putting a lot of focus in on electric, and we feel that we will be a winner in that space given the platforms that we have. For farm, it will be continue to be a global leader, not just in India, but lead around the world. Mahindra Finance perform ahead of peers, which is something that we haven't done in the past. But over the last 2 years, we've actually come back very strongly. Tech Mahindra, again, continue to perform ahead of peers. And that's, again, something that we haven't done consistently in the past. But with the new leadership coming in, we expect them to really put a lot of focus on delivery, have margins increase, and really be able to get back on track with regard to margins in particular. And across other businesses, it's a 5x growth because these are our growth gems. And we expect them to grow 5x in the next 5 to 7 years. Okay. अनीश जी, हम कोशिश करते हैं सीएनबीसी आवाज़ पर कि शेयर होल्डर्स के कुछ सवाल डायरेक्टली पूछे जाएं। तो आपके शेयर होल्डर्स में से एक सवाल जो मैं अभी लाइव आया है वो आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने स्मॉल सेगमेंट में ईवी कार्स है उसमें एंटर करेंगे क्या आप? क्योंकि आपके पास एसयूवीज हैं, लेकिन स्मॉल सेगमेंट में जो ईवी स्पेस है उसमें अभी तक आपकी कोई एंट्री देखी नहीं है हमने। वहाँ पर कोई इरादा है क्या आपका? नहीं, वहाँ कोई इरादा नहीं है, एंड वी आर वेरी क्लियर, play in a few areas which are our strengths and win big in those areas. Okay, तो उस सेगमेंट में जाने का अभी आपको कोई विचार नहीं, उस सेगमेंट अभी कोई विचार नहीं है। ओके, और ये जो आपने E2 हो या जो स्मॉल व्हीकल स्ट्रैटेजी थी इसको अबैंडन किया था, इसका रीज़न क्या था? कोर रीज़न क्या था इसका? ये एक और शेयर होल्डर सवाल मुझे आया, इसके लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था। See, we started E2 in 2008. At that time, there were no electric cars. And we learned a lot from that in terms of consumer behavior, the patterns of driving, battery management, etc. But in today's world, consumers expect the best electric cars that they are. We have to be better than Tesla. And that's what we're developing right now. So it's the quality of the car that really matters because even as we look at our XUV700, it is stacked up against the best cars in the world. And we're winning against the best cars in the world. रेवेन्यू में मार्केट शेयर आपका नंबर 1 है, लेकिन सेल्स में नहीं है। वो डायकोटमी कब खत्म होगी, या फिर आपका टारगेट रेवेन्यू में ही नंबर 1 रहने का है मेनली? See, because we don't play in the small segment. Small segment नहीं play So करते if you look at volume numbers, it may not always be the case, but even in terms of volume, there are a number of quarters where we are number 1 in volume as well. And our market share has gone up from 13% to 21% right now. And will continue to increase. Okay. So I would expect us to be number 1 in both. ओके, अच्छा, एक सवाल और शेयर होल्डर्स से ही आया है, और ये आई थिंक इस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से आपने पूछना चाह रहा था आपसे। क्या एक ये सवाल वरुण जी का है कि एक ऑटो और ट्रैक्टर या फिर एक एग्री बिजनेस जो है उसको अलग करने का कुछ सोचा है आपने मेन एमएनएम में? क्योंकि आप सेल्स डेटा आते हैं आपके, तो एक पैसेंजर व्हीकल्स का अलग सेल्स डेटा आता है और ट्रैक्टर्स का अलग से सेल्स डेटा आता है। क्या एक विचार है कि दोनों को अलग अलग लिस्ट किया जाए? ऐसा कभी आगे जाकर ग्रुप लेवल पे थिंकिंग है क्या ऐसा कभी? It depends on what is value creating for shareholders. So we have been public in saying that for us, nothing is off the table. But right now, the focus is on winning in all our markets. There is a lot of synergy also in having them together. Because when we make purchases, a purchase organization has a lot more heft purchasing together. So we will look at all the synergies, see what can be retained if we do look at other options from a structure standpoint, and then see what is the best outcome from a shareholder standpoint. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी एस्कॉर्ट्स को क्यूबोटा ने एक्वायर किया और उसके बाद हमने एक ज़बरदस्त री रेटिंग देखी है वहाँ पर। ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रोफाइल बेटर है मार्केट शेयर को लेकर भी, रेवेन्यू को लेकर भी। तो एक कहीं ना कहीं एक ये सवाल उठता है कि अगर दोनों सेपरेटली लिस्ट होंगे तो शायद वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छी मिलेगी। See, our focus is long term. We are building businesses for the long term. We are creating value for the shareholders long term as well. So whatever is good for the shareholder from a long term perspective is what we will do. Okay. चलिए अब आते हैं टेक महिंद्रा पर। टेक महिंद्रा पर आपने ऑब्वियसली एक बड़ी बेट ली है। आपने एक नए सीईओ को भी अपॉइंट किया है जो पूरी तरीके से इस क्वार्टर से मोहित जी ऑब्वियसली टेक ओवर करेंगे। टेक महिंद्रा को लेकर एक जो प्योर एक टेलीकॉम कंपनी थी उसको एक अलग अलग वर्टिकल्स में लेके जाने का, डी रिस्क करने का, ये क्या आगे जाकर क्या प्लान है इसको लेकर आपका? So उस पर काफ़ी काम ऑलरेडी हो चुका है। I would give a lot of credit to CP Gurnani and the team for building a strong business. They've gone beyond telecom. There are a number of verticals that are very strong today.
They have been the leaders in winning large deals as well. So a lot of positives have taken place. It is the most customer-centric business in the tech industry also. So we now have to build on those positives. The next path is to look at delivery and ensure a very high, consistent quality of delivery at a cost that allows our margins to be better as well. And with Mohit coming in, with Atul Sonaja coming in as Chief Operating Officer, we feel that the team is very well positioned now to be able to take that next step. मोहित जी से आपको काफ़ी फीडबैक मिलता होगा इस समय जो यूएस में हालात चल रहे हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शायद अब इंडियन आईटी में वो ग्रोथ ना दिखाई दे जो पिछले 10 साल में रही थी। क्या ये सिर्फ एक लीन पैच है या फिर वाकई में ऐसा है कि अब शायद इंडियन आईटी उस लेवल पे ना ग्रो कर पाए? We see this as a temporary patch right now because there is some slowdown in the US, but Indian IT has evolved over time. It has gone from being a cost driver, a cost reducer, to adding technology and making businesses succeed. And that is what Tech Mahindra is doing very well, because Tech Mahindra is at the forefront of technology. And now we're doing a lot more across our industries with Tech Mahindra. So putting in metaverse, for example, in 5 industries, or looking at 5G in operating plants, looking at generative AI across multiple use cases. Because Tech Mahindra can do that across 20 industries, it becomes much stronger when it goes to the marketplace. बिल्कुल। एक और शेयर होल्डर सवाल है, अधीर जी ने पूछा, क्योंकि मैं टेक महिंद्रा की बात कर रहा हूँ, कि क्या एआई में आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो ओपन एआई की सीईओ कॉन्फ्रेंस में आपके सीईओ ने कहा था? AI में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं, and there are multiple use cases as well. So we also set up a separate Mahindra.ai, which leverages a number of different AI platforms and creates a much better outcome for corporates, which Tech Mahindra is now taking to various other corporates as well. एआई को आप कैसे देखते हैं, एज अ थ्रेट और एज एन अपॉर्चुनिटी? महिंद्रा के हिसाब से अगर बात की जाए टेक, It's an opportunity. It's a very big opportunity, not just for Tech Mahindra, but for many of our operating businesses as well. ओके, तो टेक महिंद्रा को लेकर अब आपके क्या एम्बिशियस टारगेट्स हैं? क्योंकि टेक महिंद्रा एक समय था जिसमें टेक महिंद्रा ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया, लेकिन पिछले 6 महीने में काफ़ी उसमें अंडर परफॉर्मेंस आई। उसके बाद अब एक होप जगी है कि शायद वर्स्ट इज़ ओवर। नंबर्स भले ही उस हिसाब से नहीं रहे हो, लेकिन एक मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि वर्स्ट इज़ ओवर। बाकी में ऐसा है क्या? So in Mahindra Finance, we had put out targets for 3 years, about a year and a half ago, and we are monitoring them very closely. In Tech Mahindra, I'm going to allow Mohit as a new CEO. He will start as CEO on December 20th. So soon after that, he will come out and list the targets that he will meet. ओके, तो अभी उनको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, उसके बाद We have a new CEO. We have to give him the time to set his own targets. लेकिन आप and काफ़ी take it बुलिश हैं forward. इस बिजनेस को लेकर। Yes. We think it's a very good business. It has been built very well, and there's a lot of potential. ओके, अब महिंद्रा फाइनेंस की बात करते हैं, जहाँ पर क्लियरली एक टर्न अराउंड विजिबल है, और एक थोड़ी सी दिक्कत आई थी इसमें पिछले कुछ टाइम से कंपेयर टू इट्स पीयर्स, खासतौर से एनपीए लेवल्स को लेकर, और काफ़ी यहाँ पर दिक्कतें आई थी। कई लोगों का मानना था कि अगर ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी नहीं होती तो शायद स्टॉक प्राइस इतना ऊपर ना होता जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही थी। यहाँ पर अब टर्न अराउंड के क्या प्लान्स हैं आगे? So first, you see the turnaround that's happened already. Yes. Right? NPAs are down at 4.35% as of last quarter. तो 8% तक चले गए। जो 8%, in fact 16% तक गए थे at one point in time. But that is part of what we had expected, cyclical. But even with that, we're focusing on asset quality. Besides that, the growth is very strong in Mahindra Finance. There's a lot of focus on technology, on data. We have a very good team in place as well. So all the right drivers are there, and more importantly, you've seen that success in the last year and a half. So there's more to be done, and I think that's what the team is focused on right now, but it is very well on track. डिजिटाइजेशन को लेकर क्या प्लान्स हैं महिंद्रा फाइनेंस को लेकर? क्योंकि आजकल तो हर कुछ डिजिटल लैंडिंग से ही हो रहा है। तो वहाँ हमारा एक उड़ान project है, which again we've gone through 1.5 years, and we're revamping everything. So we're making the customer journey very seamless. It is in place now for fixed deposits. So for you or any of your viewers, if you want to see fixed deposit at Mahindra Finance, you will get a fantastic experience. And that's something that we will look at all our products in terms of getting digital and really creating a very good customer experience around that. ओके, और उसमें आप कंपेटिटिव रेट्स ऑफर कर रहे हैं महिंद्रा फाइनेंस के एफडीज में? Very competitive rates, and it's a AAA rated, very strong company. So from that perspective as well, it's a good place to be.
चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं तो अनीश जी से कुछ और बात करेंगे। वेलकम बैक। मैं बात कर रहा हूँ इस समय एमएनएम के एमडी एंड सीईओ, ग्रुप एमडी एंड सीईओ अनिश शाह जी से। डिफेंस को लेकर अब आपके क्या प्लान्स हैं? डिफेंस एक ऐसी यूनिट है जो अभी तक लिस्टेड नहीं है, ये अनलिस्टेड ही रहने वाली है, और इस बिजनेस में आगे क्या प्लान्स हैं आपके? See, we are very focused in certain areas only. For us, our strength is vehicles. So armored vehicles is one big area. We won a few large contracts with the army on that. We do not want to get into any of the offense-related areas. So for us, it's about focusing on a few key things that make sense for us. एरोस्पेस बिजनेस को डिफेंस में मर्ज करने का कोई प्लान है क्या अभी के लिए महिंद्रा ग्रुप में? It is something, if it makes sense, we will do. We are open to any structural changes. But the aerospace business actually is doing well. We've gotten to be tier 1 suppliers with a number of global majors as well. So the progress there has been very strong. तो ये मतलब है ऑन द टेबल है, इसको मान सकते हैं कि ऑन द टेबल है इस चीज़ को? At this point, I don't know what the details are on that. So I wouldn't say it's on the table, but I wouldn't say it's off the table either. Okay, it's not off the table, मतलब लेकिन कभी अगर इस पर विचार किया जा सकता है, इसको इस तरीके से? There's a possibility. There's some value to it, but we'll have to assess what the value is. Okay, लेकिन लिस्टिंग का कोई अभी प्लान नहीं है इस बिजनेस में? I think it has to go a long way before we think about listing. Okay. The growth has to be a lot more significant. आपकी रिसेंट लिस्टिंग थी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, 2018 में शायद मेरे ख्याल से लिस्ट हुई थी वो कंपनी। मैं उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी शानदार है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे वो अभी ट्रांसलेट नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? और लॉजिस्टिक्स में क्या आप काफ़ी पॉजिटिव हैं क्या, या फिर आपको ये एक छोटा बिजनेस ही रहने वाला है आपके लिए, या इसमें आपके काफ़ी एक्सपेंशन प्लान्स हैं आगे जाकर? Logistics is a great sector for India. As India thinks about becoming the manufacturing hub for the world, logistics is going to play a very important role. So our logistics business is very well placed. Our focus right now is long-term growth, and which is why you see some acquisitions that have been made. We're adding to the skills and strengths that we have in that business. So very bullish on it. It's one that will be a very important business for us, and we have a good team in place there, and we think that team is going to really execute well going forward and build a very strong business. इसमें कोई इनऑर्गेनिक प्लान्स भी हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर ऐसा है जिसमें शायद आगे जाकर काफ़ी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को शायद ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ आना पड़े, तो उसमें आगे जाके कोई इनऑर्गेनिक प्लान्स भी हैं क्या आपके लॉजिस्टिक्स बिजनेस में? Yes. So we are looking at acquisitions in this space. We've made some acquisitions already. But for us, we want to build a very strong logistics business. ओके, तो इस पे मतलब फोकस है आपका, ऐसा नहीं है कि? उस पे focus है. बिल्कुल। That's it. महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, और हम जो मुंबई में रहते हैं उनके लिए तो खैर ये अननोन नाम नहीं है, लेकिन और एक काफ़ी प्रीमियम भी कमांड करता है महिंद्रा नाम की वजह से, लेकिन इसको एक्सपैंड करने के आगे क्या प्लान है? क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस इस समय बूम कर रहा है, और अगर आप मार्केट्स देखें जैसे एनसीआर की मार्केट, हमारी खुद की मुंबई की मार्केट, यहाँ काफ़ी बूम आया है, लेकिन महिंद्रा लाइफ स्पेसेस अभी लार्जली मुंबई फोकस्ड ही रहने वाला है, या फिर आगे और ज्योग्राफीज में भी जाने के इसके प्लान्स हैं? The first year again, if you see over the last 3 years, the life spaces market cap has gone up many multiples. Yes. And that is a function of being much bolder. So for us, it's not about many markets. It's about being big in where we play. So we are focused on a very small number of markets, but we're going to play in a much bigger way in those markets. ओके, एक सवाल जो उठता है वो अब उठता है महिंद्रा हॉलीडेज को लेकर, क्योंकि वैसे मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं खुद क्लब महिंद्रा का मेंबर हूँ, और महिंद्रा हॉलीडेज में ये जो बिजनेस मॉडल है, ये आपको लग रहा है कि अब सैचुरेशन के करीब हैं हम इसमें, या फिर जो आपका बिजनेस मॉडल है ये आपको लग रहा है कि आगे भी इसकी विजिबिलिटी है अगले 10, 15, 20 साल के लिए? The biggest strength in holidays is the feedback we have from members when they go to the resort is fantastic. Yes. Right? आपने भी experience किया होगा, and that is something that we want to take to a number of other people. So this is a business we want to literally grow 5x, maybe even more, because we have a very strong ability to deliver great holidays. And we will look at doing so for members and non-members in future maybe. We will look at different changes in the model. But we feel that the model has been working well. At the same time, there's opportunity beyond the current model. So we will look at both. Okay. कोई और बिजनेस एरिया है अनिश जी जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस समय स्ट्रेंथ है, जहाँ पर आप इस समय वेंचर करना चाहेंगे?
So we have a number of other growth gems. Those are the ones that we're focused on. But beyond that, we're really not looking at new things. If something really good comes, we will take a look at it. But our primary focus right now is focus on what we have and grow that significantly. ओके और उसमें आपके पास लग रहा है कि आपके पास अभी जो टीम है, करंट टीम है, वो इसको आगे लेके जाने के लिए सक्षम है इस ग्रोथ को अचीव करने के We have a fantastic team. And a number of folks have grown up within the Mahindra system and are doing really well. We've had a few folks come in from outside, from very marquee firms around. So our ability to attract and retain talent is very good. And that's really the secret of our success. एक आखिरी सवाल, आनंद महिंद्रा से आपने क्या सीखा है? एक अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वालिटी है उनकी जो आप हमें बताना चाहें तो? I think the most important quality of his is enabling to bring out the best in people. That is something that he always wants to do, and he is very empowering in doing so. And that's one that I've learned a lot from him. ऑलराइट अनिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और हमें इतना समय देने के लिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. Thank you very much. थैंक यू.